Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well and are blessed by the mercy of God. Today, I have chosen a poem from your English book that is from class 8th, and that is Prayer for Strength. Okay, students, are you getting me? So let us discuss what is the prayer for strength and what are the main points which are discussed by the poet in this poem and what is the overall meaning of that poem. Okay, the name of the poem is Prayer for Strength. Prayer for Strength, it is written by one of the famous poet, that is Rabindranath Tagore. Okay, students, do you know who is Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore is the famous poet of India. He has written so many poems and he has got so many Nobel awards for that. So let us discuss what is the poem Prayer for Strength. It is written by Rabindranath Tagore. Okay, students, let me discuss some important points which are related with the poem so that you can easily grasp the overall meaning of the poem. Okay, the main points which are discussed by the poet in this poem are: in this poem, the poet wants God to strike at his heart. इस पोइम में, इस नज़म में द पोइट, शायर चाहता है अल्लाह ताला से, वट ही इल्तिजा करता है अल्लाह ताला से, शायर अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट, मेरे दिल पे एक ऐसी चोट दो, मेरे दिल पे एक ऐसी चोट दो. Let us imagine the poet here is not he does not want God to give him so many things such as health, wealth, etc., those things which are essential in our which are essential in your day-to-day life, but the poet here wants God to strike. The शायर चाहता है, शायर इल्तिजा करता है अल्लाह ताला से, गॉड से, कि अल्लाह मेरे दिल पे एक ऐसी चोट दो, so that he could bear the joys and the sorrows of poverty, ताकि शायर बर्दाश्त कर सके, एक ऐसी चोट दो मेरे दिल पे ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं खुशियां और गम. जॉयज मीन्स खुशियां एंड सॉरोज मीन्स गम, सो दैट ही कैन बियर द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ पॉवर्टी. मुझे एक ऐसी चोट दो मेरे दिल पे, एक ऐसी चोट दो जिससे मैं बर्दाश्त कर सकूं खुशियां और गम जो मैं अपनी गरीबी में देख रहा हूँ, जो मैं अपनी गरीबी में महसूस कर रहा हूँ. मुझे एक ऐसी कुव्वत दे, मुझे एक ऐसी चोट दे जिससे मुझ में, so that I can very well deal with the joys and sorrows of poverty. Okay, this is the first wish of the poet. What is the first wish of the poet? What does the poet want? Okay, students, tell me, what does the poet want from the God? The poet want God to strike at his heart so that he could bear the joys and the sorrows of poverty. And then is the second wish which he wants from the God. He also wants from the God. Okay, students, what he wants from the God? And he also prays, इल्तिजा करता है अपने अल्लाह ताला से, टू गॉड टू रिमूव हार्डनेस एंड फिल अप हिज हार्ट विद लव एंड पैशन. मेरा दिल, ओके स्टूडेंट्स, व्हाट ही वांट्स, कि मेरा दिल, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, टू रिमूव ऑल द हार्डनेसेस, मेरे दिल से, मेरे जहन से हार्डनेस, ऑल द परेशानियाँ, जो भी मैं डे टू डे लाइफ में परेशानियाँ फील कर रहा हूँ या उनसे मैं डील कर रहा हूँ, दोज हार्डनेसेस विच आई डील विद माई लाइफ, विच द पोएट सीज इन हिज डे टू डे लाइफ, ही वांट्स टू रिमूव दैट हार्डनेस. अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, मेरे दिल से ये सारी परेशानियाँ दूर कर दो और मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, या मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत और पैशन भर दो. What are the two wishes the poet wants from the God? First wish is, if the poet wants God to strike at his heart so that he could bear the joys and sorrows of poverty. So are you understanding? What is the first? That is the first point which the poet wants from the God. The poet wants from the God to strike at his heart so that he could bear the joys and sorrows of poverty. And he also prays to God to remove hardness and fill up his heart with love and passion. This is the main comprehension of the poem, through which you can understand what is the full meaning, what we are going to discuss in the poem. Okay, students, have you got it? Okay, let us start the poem. That is the first. In first passage, let us discuss. We will discuss stanza by stanza, so that you can understand it fully. Stanza first. In a stanza, you can see in your books. Also, you can open your books. First stanza. What is the first stanza? In the poem, the first stanza is
This is my prayer to thee, my Lord, strike. This is my prayer to thee, my Lord, strike. Second stanza, strike at the roots a penury in my heart. Okay, have you got it? This is my prayer to thee, my Lord, strike at the roots a penury in my heart. Okay, students, let us discuss what these stanzas mean. First stanza, this is my prayer. The poet prays to the God. Okay, this is my prayer. I will discuss you within Urdu language so that you can understand fully. Okay, students, this is my prayer. ये मेरी दुआ to thee, आपसे. To thee means ये किसकी तरफ pray कर रहा है? आपसे means किसका मतलब? To thee means God. Okay, my Lord, strike. मेरे अल्लाह, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि मुझे मेरे लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मुझे ऐसी चोट दो. ओके, दिस इज माई प्रेयर. ये मेरी दुआ है टू आपसे. टू थी मीन्स हियर आपसे. आपसे मीन्स whom he is related? God. This is my prayer to thee, my Lord, strike. मेरे दिल पे एक ऐसी चोट दो मेरे मौला. Strike at the roots of penury in my heart. What is thee here means? I have written there the Urdu meaning of these difficult words. Thee means आपसे. आपसे means who the poet thee here he uses the word to thee. Thee means आपसे. आपसे, who is आपसे? To thee means who is that? That is God. And penury. Penury is the second word which is which are you seeing in your second stanza? Penury. P-E-N-U-R-Y. Penury means मोहताजी. मोहताजी. अल्लाह ताला से दुआ करता है. दिस इज माई प्रेयर. ओ अल्लाह, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ, मुझे एक ऐसी चोट दो. स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ पेनोरी. मेरे दिल में जो रूट्स ऑफ पेनोरी है, मोहताजी है, जो मैं अपनी गरीबी से मोहताजी देख रहा हूँ, विच आई एम सीइंग ड्यू टू पुअर्टी. Okay, the penury which I am seeing in my day-to-day life due to penury, एक मोहताजी में देख रहा हूँ. due to poverty I am seeing the penury. मोहताजी में गरीबी से देख रहा हूँ. उसके रूट्स पे, उनके जड़ पे एक ऐसी चोट दे अल्लाह ताला. ओके, उनके जड़ पे जो मेरे दिल में उनके लिए वो मोहताजी एक पैदा हुई है, उस पे एक ऐसी चोट मारो, मुझे कौत दो, ताकि मैं उस इस मीन्स दैट मीन्स उस मीन्स हियर द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट अल्लाह, that God, please strike at the roots of penury. मेरे दिल में जो मोहताजी भरी हुई है, उस चीज़ से मुझे बाहर निकालो, जो मैं अपनी गरीबी की वजह से मोहताजी फेस कर रहा हूँ, मोहताजी देख रहा हूँ. ओके, गेट आउट. आई वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम दैट. मैं वो अपने दिल से निकालना चाहता हूँ. मेरे अल्लाह, मुझे ऐसी कौत दे. गिव मी द स्ट्रेंथ. ओके, मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दो ताकि मैं पेनोरी से बाहर आ जाऊँ. मेरे दिल से जो पेनोरी है, मोहताजी है, वो बाहर आ जाए. ओके, हियर what is the first stanza? This is my prayer to thee, my Lord, strike. Stanza second, strike at the roots of penury in my heart. Below I have mentioned 3 difficult words. What is thee, what is strike, and what is penury? Are you understanding? Okay, student. Then is that stanza 3. Stanza 3. In this stanza, the poet is telling us, give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength. Hey Allah Ta'ala, hey God, मुझे strength दो. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows, which I have already discussed with you. That please Allah, the poet here prays to the God that God give me the strength so that I can bear joys and sorrows. मुझे एक ऐसी कौत दो जिससे मैं अपनी खुशियाँ और गमों को बर्दाश्त कर सकूं. Are you understanding? That is the second is fourth stanza. There is the fourth stanza. Give me the strength to make my love fruitful in service. ऐ अल्लाह, गॉड, मेरे मालिक, मुझे ऐसी ताकत दो, मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं मेक माई लव, जो मेरा प्यार है, उसको मैं फलदार मीन्स जिसको मैं फ्रूटफुल बना सकूं. ओके, फ्रूटफुल बना सकूं खिदमत के लिए, दूसरों की खिदमत के लिए. ऐ अल्लाह, गिव मी द स्ट्रेंथ सो दैट आई कैन मेक माई लव फ्रूटफुल फॉर अदर्स. For other service. Okay, there here the poet wants to give her love, wants to give his love to other people for their service, for the needy people. Okay, are you understanding? Go. These are the 2 stanzas. Here are the difficult words which I have written here: bear, joy, and sorrow. Let us the stanza 5. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might.
insolent might. Okay, here is what is insolent is a difficult word. You are getting insolent means buri ताकत, and disown means छोड़ना. The poet here prays to the God that God give me the strength so that I can never disown. मैं गरीबों को अपनाऊं, उनसे दूर ना हो जाऊं, उनको दूर ना करूं अपने आप से. ओके, या बुरी ताकतें जो मुझ में बुरी कौत या बुरी चीज़ें जो मेरे दिल में बसी हैं उनसे मैं दूर हो जाऊं. मैं गरीबों को अपनाऊं, उनको उनकी मदद करूं, इनसे प्यार मोहब्बत बांटता जाऊं. गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पुअर एंड बेंड माई नीज. अपने घुटने नहीं टेकूं. घुटने टेकना, बेंड माई नीज मीन्स घुटने टेकना. Bend my knees, here is a word, bend by phrase, bend my knees, here is a phrase, bend my knees. What does the bend my knees means? घुटने टेकना. मैं अपने घुटने नहीं टेकूं. Insolent, बुरी ताकतों के सामने. Okay, then is the stanza 6. Give me the strength to raise my mind high above daily truffles. Here the poet wants God to give him the strength to raise his mind. अपने दिमाग को ऊपर उठाऊं. किन से? दुनियावी परेशानियों से. डेली ट्रफल्स मीनी दुनियावी परेशानियां, बुरी परेशानियां. ओके, दुनियावी परेशानियां. Here the poet wants us to raise his head. सर उठा के चलूं. किन से? दुनियावी परेशानियों से. Okay, then is the last. Here I have written that these difficult words. Disown means छोड़ना and insolent means बुरी ताकतें. Daily trifles means दुनियावी परेशान. And that is the last stanza. And give me the strength to surrender my strength to Thy will with love. और अल्लाह ताला मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मुझे ताकत दो, मैं अपनी ताकत आप पे निछावर करूं. आपके सामने थे विल, आपकी मर्जी के सामने निछावर करूं. जो भी मेरे अंदर ताकत है, जो भी मेरे अंदर विल है, मैं सब कुछ आप पे निछावर, सरेंडर मीन्स निछावर कर दूं आपके थे विल, आपकी मर्जी के लिए. Good, this was the poem. These are the stanzas which are included in your poem. I have summarized this poem into these stanzas. These are stanzas, and this is the main comprehension of the poem. So hope you all get this very well, and inshallah soon I will be with the second lesson in your other online class. Okay, thank you.